बस मेरी यही अरदास है गुरु जी, ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਸਭ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ। ਸਤਸੰਗ, ਸੇਵਾ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਾਨ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਵਾਂ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦਿਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਅਗਲੀ ਸਾਹ ਦਾ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਹਰ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਾ ਭੁੱਲਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਦੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਥੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਬਸ ਇਹੀ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸਦਾ ਤਨ ਅੰਤਰ ਨਾਮ ਸਮਾਲੇ, ਜੀਆ ਜੰਤ ਜਿਨ੍ਹੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਮੁਕਤ ਪਦਾਰਥ ਤਿਨ ਕੋ ਪਾਏ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਰਤੇ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਵਿਆਖਿਆ। ਹੇ ਭਾਈ, ਨਾਮ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਧਨ ਹੈ ਜੋ ਸਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੇ ਭਾਈ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। These words guide us that all we need to do is get soaked up in his love, and as guided by Guruji's beautiful daughter Aarti ji, where there is faith, there is no fear. So with these two thoughts, today we are blessed to have her amongst us, and we all have heard her umpteenth number of times, but as Guruji says ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। Most of us on this platform today are very, very excited to have her because Guruji is giving us the pearls of wisdom through the Sangat who has seen Guruji in his physical form. And when these Sangat ji share their journeys with us, we relive those moments with them as if they are reliving and we are there with them. So with these words, I request with folded hands and bowed head to Aarti ji to kindly unmute herself and share whatever Guruji Maharaj is guiding her. Over to you, Aarti ji. जय गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। सारी संगत को नमस्कार, मेरा हाथ जोड़कर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। आंटी, I have to tell you, I'm in love with your voice. आप जिस तरीके से आप बोलते हो, it is mesmerizing. So yes, I had to say it. Thank you to Subodh uncle for giving me this opportunity, completely unexpected today. And Satsang is always a blessing, and everybody has heard that a lot of times. And why it is a blessing, not only because आप अपने गुरु की सिफत करके अपनी ही जुबान को शुद्ध कर रहे हो, अपने ही पुट्ठे लेख को सीधे कर रहे हो, अपने ही कर्म संवार रहे हो. It is a blessing because it gives you a chance to remember your guru,
राइट? आप गुरु का सत्संग करते हो तो आप गुरु को याद करते हो, और अगर गुरु को याद करने का मौका मिले तो फिर उस मौके को क्यों छोड़ना है, राइट? So thank you for giving me this opportunity, and thank you, Guruji, because you are the mover and shaker, and you make everything go around. So सबसे पहले तो हम आजकल जय गुरुजी जरूर कहते हैं, लेकिन गुरुजी के टाइम पे हम नमस्कार ही किया करते थे, हम नमस्ते करते थे। और आजकल हम जो शिव पुराण पढ़ रहे हैं उसमें ये बात रीइंफोर्स हो गई कि बैक देन ऑल्सो जितने भी देवी देवता थे वो महाशिव को नमस्कार ही किया करते थे। So I've read it in almost every chapter, that the way they used to greet was with palms folded in reverence. We always hear or read about the Devi Devtas acknowledging Lord Shiva by saying obeisance to thee. And so that's how we had it even back then. Ye mantra jap, ye Jai Guruji, all these things came into effect after Maharaj left his chola. And I always say that his powers have become many-fold. His sangat has multiplied by leaps and bounds, because जब गुरुजी चोले में थे तो वो physicality की मर्यादा होती है, that everyone is bound by that. और गुरुजी इतने प्रैक्टिकल तरीके से हमें ये सिखा के चले गए that ये शरीर कितना टेम्पररी है, तो हम क्यों ऐसी सुपरफिशियल चीजों के पीछे भागते हैं जो लास्ट ही नहीं करेगी. What is immortal is the soul. So why don't we focus on going inwards as opposed to going outwards? And that is that is something, this is the thought I wake up to every single day, कि गुरुजी कैसे अपने आप को आपके लायक हम और बनाए. And satsang is never, at least in my mind, it's not only about happily ever after, कि आपने कुछ मांगा, आपने किसी चीज की डिजायर करी और आपको वो चीज मिल गई और वो हो गया जी जय गुरुजी. I asked for a job, I asked for a child, I asked for a house, I got that. So life is great. But as Guruji used to say कि मैं एक झोली में रेवड़ियां डाल के बैठा हूं और लोग वो मांगने आते हैं और मैं देता जाता हूं, और असली चीज किसी को मांगनी ही नहीं आती. एंड एज लक वुड हैव इट, हम ये बात सुनते थे लेकिन कभी वो मत गुरुजी ने नहीं दी कि हम शायद उस टाइम पूछ सके कि गुरुजी असली चीज है क्या. लाइक आई ऑलवेज से दैट गुरमुख और गुरमत गुरुजी की सबसे बड़ी बख्शीश है, और वो भी कब देनी है, कैसे देनी है, कितनी देनी है, किसको देनी है, वो गुरुजी डिसाइड करते हैं. लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. और अगर आपकी जिंदगी में गुरुजी आ गए तो इसका ये नहीं मतलब that you will look at life through rose tinted glasses. And a lot of people say जब से गुरुजी हमारी लाइफ में आए हमारा ये ठीक हो गया, हमारा वो ठीक हो गया. और मेरे को लगता है कि मैंने तो गुरुजी से पहले लाइफ देखी नहीं. My entire life started with Guruji, and I hope and I pray that I'm worthy that it ends with Guruji as well. So I cannot ever give that satsang के मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी और फिर मैं गुरुजी से मिली और वो प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, क्योंकि मेरी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आए हैं, it came with under Guruji's fold, under Guruji's shelter, under Guruji's protection. So because as I said, I have not seen a life before Guruji or other than Guruji. Guruji is the only life that I know. In fact, I was telling somebody else that when we go to things like Mata ki Chauki या और किसी मंदिर में जाना या किसी religious स्थान पे जाना, with all due respect, I feel so lost because I don't even know what to do. क्योंकि गुरुजी के साथ जो फॉर्मेट देखा, जो समझ में आया, कोई कर्मकांड नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं, और वैसे हमें वही रिलीजन और वही स्पिरिचुअलिटी पता है और कुछ हमें पता नहीं. सो वेरी वेरी प्रैक्टिकल गुरु. जो भी उन्होंने सिखाया और आज तक सिखा रहे हैं, वो किसी डिस्कोर्स, किसी भाषण, किसी रिचुअल के जोर पे नहीं सिखा रहे, वो बहुत प्रैक्टिकल तरीके से सिखाते हैं.
और गुरुजी जैसे कहते थे ना कि लाइफ एंजॉय करो, ऐश करो, अक्सर वो ये बोलते थे. उसका ये मतलब है that he's given us so much to be grateful for. इतनी blessings है if we start to really internalize and think. And Guruji never said कि अच्छे कपड़े ना पहनो या don't drive a good car. What he taught us that सब कुछ होते हुए भी उसमें हम लिप्त ना हो जाएं, उसमें हम जिसे कहते हैं ना, उसमें हम धस ना जाएं उस मटीरियलिस्टिक चीज में. एंजॉय एवरीथिंग जो गुरुजी ने आपको बख्शीश दी है, लिव इट अप, बट उसके साथ अटैच मत हो. मैं मोस्ट रिसेंट आपके साथ सत्संग शेयर करूंगी. And as I said, every day is a challenge. Just because I met Guruji early on, that doesn't mean that I have not been through any financial problems or relationship problems or health problems or problems related to job. Like whatever is out there, I have experienced. But I think the biggest blessing that I have, and that is my biggest asset, is my unwavering, my unflinching faith in Guruji. And people often ask me, आप क्या मांगते हो, आप क्या प्रे करते हो गुरुजी से और कैसे प्रे करते हो? तो मेरा एक ही जवाब होता है कि अव्वल तो कोशिश करके हमें मांगना नहीं चाहिए. But again, we are human beings, we are working as designed. हमें भगवान ने बनाया ही ऐसा है. और one school of thought says कि अगर माँ बाप से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? So if we must ask, then and this is a very personal thing that I'm sharing with जो भी आज के श्रोतागण है जो सुन रहे हैं गुरुजी की मर्जी से, is that I always say to गुरुजी कि गुरुजी एक तो बख्श दो, because हमें पता ही नहीं है कि हमारे कर्म अच्छे हैं कि बुरे हैं और कितने बुरे हैं और कितने अच्छे हैं. तो हम जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, हमें प्लीज बख्शो, हमें सही राह दिखाओ, हमारा मार्गदर्शन करो, हर पल करो और अच्छी संगत में रखो. So अगर गुरु ने आपको ये दो चीजें बख्श दी, then I think your life is sorted. Surrounding ourselves with like-minded people. तभी हम कहते हैं सत का संग is very, very important in life. That, and then asking or seeking forgiveness every step of the way, because sometimes we might feel that we are right, but we may not be right in the grand scheme of things. Again, our view is very myopic. We only see up to this wall. We don't know what lies beneath or beyond that, right? So, just begging Guruji for his guidance, for his meher and sarbat da bhala, I think is the highest form of worship. So 2020, a very, very tough year in ways more than one. And certain things are very, very intimate. So probably I don't even know what's going to come out of my mouth today. So Guruji, please mere mukh mandal pe virajman rehna and guide me every step of the way. So lots happened, but the thing that moved me completely was, when my father was diagnosed with stage 4 lung cancer, and this was on 15th May. I still remember कि कैसे गुड़गांव से किसी संगत का फोन आया था. Her name is Neelam Aunty, and she works at Artemis Hospital in Gurgaon, and she saw the reports and she said, look, I'm not a doctor, but jo preliminary screening mein sunne mein aaya hai is that things don't look great, but the doctor hasn't officially read the report, so don't quote me on this, but लगता है कि there is some problem, right? So मैंने उनको ऐसे ही कहा, I still remember, I think it was Friday, 15th May was Friday. Yeah, I think so. Friday morning की ये बात है, और मैंने उनको ऐसे कहा, मैंने कहा just send the reports over to me, या मैं यहाँ किसी को दिखा लेती हूँ. So the plan in Gurgaon was कि वहाँ already Friday शाम हो चुकी थी, हमारी Friday सुबह हो रही थी. And over the weekend, probably the doctor had to read the reports, and Monday again, my parents had to go back to get sort of the formal diagnosis. So, yahan kyunki Friday morning tha, she sent the reports. I had my friend look at it, and she looked at the report and she said, no, Aarti, this is not good. This seems to be stage 4 already.
My heart sank. I said, ye kaise ho gaya? With no symptoms, my dad has been like the pillar of strength for the entire family, just getting the lion of the house, in the pinkest of health, and always up and about. And I said, at the age of 82, why did this have to happen now? A lot of questions came to my mind. Ab kyun aise kaise? He's never smoked. How did this happen? Like a million questions. But again, you have to remind yourselves that in the event of any adversity, the first step is acceptance. Because if you don't accept, you only make yourself more miserable. And I'm telling you based on my practical experience. क्योंकि कई होता है ना कि some people say कि आप भाषण दे रहे हो. मैं भाषण नहीं दे रही. जो मैंने जो भुगता है, जो मैंने जिया है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ. So सबसे पहले तो acceptance कि this is what it is. And imagine being the first one to find out about this. My parents didn't know. My father was saying कि अच्छा हम हॉस्पिटल गए थे, टेस्ट करवा लिए, मुझे लगता है मंडे को डॉक्टर बुला के एंटीबायोटिक्स दे देगा and then I'll be fine. Imagine. And you know the reality on the other hand that this is not antibiotics wala मामला. In fact, this is a tumor, and that too, a tumor that has manifested itself in stage 4, which is already late. So मैंने वो बात सुनी, मैंने कहा हाँ जी पापा आप ठीक हो जाओगे. उसके बाद this रोज का this uphill battle of evaluating किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराएं, क्या ट्रीटमेंट, कौन से ऑप्शंस. कोविड उस टाइम इंडिया में पीक पे था. Like doctors were not available. People जिनकी surgery schedule थी had to be cancelled because the entire world was grappling with the after effects of a pandemic. ना मैं वहां जा सकती थी, ना मेरे पेरेंट्स यहाँ ट्रैवल कर सकते थे, और दूर बैठे मैं और भी मजबूर फील कर रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं. Anyways, as our loving, magnanimous, ever generous Guru, he got on the books of this very reputed doctor in Vedanta, और उनका ट्रीटमेंट शुरू हो गया oncologist के साथ. So chemos की, immunotherapy की, but रोज ऐसे नजर आ रहा था कि we are trying to fight a lost battle. One, because of his age factor. Second, because of the other underlying conditions, like he was a heart patient too. And third, just the overall sort of the situation with COVID being rampant, he going into hospitals every single day. तो एक वो डर सा लगा हुआ था कि imagine he's going into the hub almost like every other week to get a treatment when his immunity is so low himself. Guruji कैसे होएगा ये? But एक होता है ना कि when you are under your Guruji's fold, you have a force field, a bubble, a protective layer around you, and then this assurance कि तुम्हारा गुरु दादा है और कुछ नहीं होगा. And doctors would predicted that 6 months, stage 4, this age, probably 6 to 9 months, even with treatment. तो वो धुक धुक सी लगी रहती थी कि मैं इतनी दूर बैठी हूँ, पता नहीं कब न्यूज आ जाए, पता नहीं कब न्यूज आ जाए, और मैं ट्रैवल नहीं कर पा रही. So आप वो कश्मकश और वो मजबूरी आप समझो as a daughter what I was going through. And this was not the only problem. There were other issues that had manifested itself, like they say, when it rains it pours, or as in the army speak they say, troubles come in battalions, right? But मैं भी फौजी की बेटी हूँ, so I know how not to quit the battleground. So that's exactly what I did. And I said, bring it on, जो भी है, Guruji test ले रहे हैं, और शायद मेरे ही कर्म है जो मेरे आगे आ रहे हैं, right? So as I said, acceptance. So why complain? जो मेरे कर्म है वो मेरे आगे आ रहे हैं और मुझे उसको भुगतना है और smilingly भुगतना है. And I also have to know this, that whatever मेरे को लग रहा है मेरे पे पहाड़ टूट रहा है, right? But I have to know that 90% of what I was supposed to face वो तो मेरा गुरु अपने ऊपर ले रहा है, तो मैं 10% में ही डर जाऊं. So anyway, that happened. So सबसे पहले शुक्राना to my guru for keeping my mental strength, for keeping my faith intact, for making me do endless satsangs when I needed it the most.
पहले तो मुझे वो जूम का कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ आता था कि ये ऑनलाइन सत्संग ये क्या है. वी नेवर डन दिस बिफोर. ये गुरुजी के टाइम पे नहीं होता था. सत्संग तो लोगों के साथ बैठकर गुरुजी के शरण में बैठकर होता है. ये हम क्या कर रहे हैं? वी आर लुकिंग एट अ फोन एंड वी आर टॉकिंग. बट नो, गुरुजी न्यू व्हाट टू अनफोल्ड, हाउ एंड व्हेन. और वो टाइम निकलता गया. एनीवे, सो फास्ट फॉरवर्ड टू अक्टूबर. सो मैं सबसे पहले अक्टूबर में गई. मई में मेरे को पता चला था. ऑल दीज मंथ्स आई कुड नॉट गो. अक्टूबर में आई फाइनली वेंट एंड आई टुक विद मी गुरुजी की पहनी हुई ब्लेस्ड जुत्तीज. मैं उसका सत्संग कई बार कर चुकी हूँ. हाउ गुरुजी हैड गिवन इट टू मी ऑन माय बर्थडे. जो उन्होंने पहनी हुई थी उन्होंने वो उतारी और मेरे को दी. और मेरे को पता है कि what those juttis have taken upon itself, because I see the condition of those juttis. I have many other pairs from Bada Mandir which look brand new, but वो गुरुजी ने जो मेरे को जुत्ती प्रसाद दिया था, it was brand new and now it looks pretty battered, and I just feel that it's taking up a lot of kash, a lot of challenges जो probably मेरे ऊपर आनी थी, मेरे soul के ऊपर आनी थी, that jutti has taken upon itself. So I took that pair, and through the pandemic, my travel was seamless. In fact, I was amazed because मैंने लोगों से horror stories सुनी थी कि कितना मुश्किल हो गया travel और कैसे inconvenience करते हैं और कैसे बारी-बारी checkpoints हैं. It's difficult to get in and out of the airport, but nothing. It was like it was a breeze. I got home. I still remember that was my dad's, I think, 5th chemo session, 5th या 4th कुछ ऐसा था. और मैं उनको लेके गई तो फिर मैं वो जूती प्रसाद भी हॉस्पिटल मेदांता उनके साथ लेके गई. मैंने कहा पापा आज गुरुजी को भी लेकर चलते हैं. बहुत सारे पेशेंट्स हैं who are in need of blessing, तो आज गुरुजी को भी फेरा करवा कर आते हैं हॉस्पिटल का. And that day, so normally his chemo would take like the entire day. सुबह सुबह जाओ और शाम हो जाती थी और थक के imagine जब पेशेंट में कोई strength ना हो and all day you're in the hospital dealing with the paperwork and the wait and all that good stuff. I remember that day we were in and out 2.5 घंटे में. हम सुबह गए and by noon we were back. And I remember my dad's words saying कि आज कीमो करी भी है उन्होंने कि नहीं. And I said, पापा सब कुछ वैसे ही हुआ है जैसे अक्सर होता है. The only difference was that today, and this is just a belief, I was just joking. I said, आज गुरुजी आपके साथ जो गए थे, वैसे तो गुरुजी आपके रोम रोम में अंग संग है. But just taking the most prized possession, we saw the difference. So anyway, that happened. And then my trip was just for 2 weeks. I still remember that was the weekend, just weekend में land करी हूँ. उसी weekend अक्टूबर में बड़ा मंदिर भी खुला था. So against all odds, गुरुजी ने अपने दरबार में बुलाया, अच्छे से दर्शन हुए, and मैं वो जुत्ती प्रसाद मॉम डैड के साथ छोड़कर वापस आ गई. And believe you me, संगत जी, I don't like to let go of that because I feel कि मेरी सारी जिंदगी की जमा पूंजी मेरी biggest wealth हुई है. But I left that because I just felt that at this stage my parents probably needed way more than I do. So वो मैं छोड़कर वापस आ गई. उसके बाद फिर कीमो से जो expected results थे after 6 sessions वो नहीं मिले. तो डॉक्टर ने इम्यूनोथेरेपी शुरू कर दी. So immunotherapy के भी 6 sessions plan किए थे. लेकिन after the 4th session of immunotherapy, February end में पापा का hemoglobin drop कर गया. So he was hospitalized for blood transfusion. अब जब ये हुआ तो एक और setback लगा और एक sense of urgency सी हो गई कि do I need to go? And again, we all have those moments where we are enveloped with fear. And then you have to hold on to your faith to overcome that fear. And that's exactly what I did. A lot of people around me started saying, you should go, you should not wait. Pata nahi kyun nahi travel kar rahi hai? Why are you sitting here? You're going to regret this. You don't want to go after everything is over. Imagine, your state of mind, and then you're hearing all of this. So I just looked at Guruji and I said, Guruji, this is a terrible time from a work standpoint because
I was on a very, very important program, and they just had certain deliverables that I could not move. It was a typical M&A project. And work like us time peak pe tha. 1st March ko was, my daughter's sweet 16. And I was like, these two big milestones, end of February, I think 25th ko, he was hospitalized, 25th Feb. So I wanted to do something very small for, making my daughter's sweet 16 special. और वो 1st March को था. अब मैं इस कश्मकश में कि मैं 25 से 26 की फ्लाइट लूं, 27 की फ्लाइट लूं, क्या करूं? Should I drop everything and go? And then, हमारे पास एक ही रामबाण है, which is Guru Maharaj. So I looked at Guruji and I said, Guruji, मुझे पता है कि पापा घर आएंगे, और अगर पापा घर आएंगे तभी मैं अपनी बेटी के लिए, अगर छोटी सी भी मेरे को पार्टी करनी है तो मैं तभी करूंगी. Otherwise, I don't want to have people, singing and dancing in my house when my father is in the hospital. As simple as that. As special as this milestone is for her, I will not do it. But I also know कि आप मेरे विश्वास का मान रखोगे और दोनों चीजें होगी. तो जो मैंने पार्टी पहले रखी थी 1st को, मैंने 25 या 26 को कैंसिल कर दी थी. I said, my dad's been hospitalized, so for now, all the plans are cancelled for 1st March. And stay tuned for additional details. 27th, I think he came back home and everything was reinstated. But in the meantime, मैंने 1st March रात की अपनी tickets करा ली थी. I said, I just have to go. So I said, Anya, we'll do your celebration on the 28th. I will spend the entire day on 1st March for you, and then रात की flight लेकर मैं चले जाऊंगी. On 1st March, मैंने एक चिट्ठी गुरुजी को लिखी, और 2 लाइन की चिट्ठी कि एक बेटे की अरदास, गुरुजी मुझे शक्ति देना कि मैं अपने माँ बाप को, अगर आप ठीक समझो तो मेरे को शक्ति देना कि मैं अपने माँ बाप को वापस अपने साथ लेकर आ सकूं. ये चिट्ठी के बारे में मैंने किसी को नहीं बताया. Like my little one follows me like a shadow. उसको भी नहीं पता था कि मैंने ये चिट्ठी लिखी है. और चिट्ठी लिखकर मैंने ये जो गुरुजी के यहाँ चरण के नीचे मैंने रख दिया. So I kept that and I left. 1st रात को मैं निकली, इंडिया में 2nd रात को लैंड करी, और 3rd March को ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी. Now in the meantime, जब इनका पापा का हीमोग्लोबिन लो हुआ था तो उन्होंने दोबारा पेट स्कैन किया कि भाई अब ट्रीटमेंट करने का और फायदा है. Maybe it is causing more damage than good, So when the PET scan was done, it showed progression of the disease. So that means even immunotherapy did not work, right? So that was a setback. और वो report भी पहले मेरे पास आ गई थी, and I had my friend read it, and she already told me, she's like, look, it's just a matter of time. I don't think medical science can do anything at this stage. So उसने मेरे को पहले ही prepare कर लिया था, and that's why I had sort of made up my mind that अगर वहाँ treatment हो नहीं सकती, वहाँ doctors कुछ कर नहीं सकते, then I have no reason to leave them behind. I should bring them back, because right now what matters to me is quality more than quantity. So I'm not counting the days. I just want to make the days count. जो भी समय गुरुजी की कृपा से बचा है, I want to make the most of it. I don't want to be thousands of miles away. So whatever is in my power, I will take my chances and I will try to bring them back. So this was like a burning desire. मैं इस mission के साथ गई थी. So 3rd को जब meeting थी, so I knew that this is going to be a tough meeting. And for some reason हमारे साथ हमारा मैं थी, पापा थे, और हमारा domestic aid गया था. So I told that domestic aid and papa कि सर आप बाहर wait करो, I just want to meet the doctor in private. So he came and he said, did you look at the scan? And I said, yeah, I did. He said, do you understand what it means? I said, yeah, it says very clearly in English that it's progression of the disease. And he said, so to sum it up, I just want to tell you that whatever results we wanted to get from the treatment, we did not get it. And at this stage, whatever the medical science could do, we've done it. And unfortunately, we can't do anything else. And I don't know what came to my mind, but I looked at the doctor and I said, never mind, doctor, where your medical science ends, his divinity begins.
This is what I said. I said, I would like to take my father back to New Jersey with me. And he looked at me. He's like, he didn't use these words that, are you crazy? But I could just read it on his face. He's like, impossible. That is impossible. I cannot give you the approval for taking your father to New Jersey. He will not endure a long flight like this. You will kill him on the flight, and you will force the airline to do an emergency landing. These were his exact words. And imagine, when I'm hearing this, I'm getting chills. Then he sat me down. He said, look, you look at his condition. He from literally going from his bedroom to the bathroom, he goes out of breath. Aap 40,000 feet ki altitude pe plane fly karega. He has no lung. How do you think he's going to breathe? He will get breathless. If he doesn't get breathless, he stands a very high risk of developing blood clots, and he will not be able to sustain this flight. And as his treating physician, I cannot give him the certificate of fitness to fly, and no airline will take him. उन्होंने ये words बोले, और मैंने सुना, और मैं उनके ऑफिस से निकल गई. अब अंदर मेरी धुक-धुक ये चल रही थी कि मैंने बोल तो दिया कि आपकी मेडिकल साइंस जहां फेल हो गई, जहां खत्म हो गई, वहां उनकी डिविनिटी, उनके मिरेकल शुरू होते हैं. And that is true. That is actually true. How will we appreciate miracles? How will we ever appreciate divinity if, जो डॉक्टर ने लिखा वो हो गया, या जो हमने प्लान किया वो हो गया? फिर तो हमें लगता है ना, जो हम किया हमने किया. जब सब कुछ इम्पॉसिबल नजर आता है और सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तभी तो तुम्हें डिविनिटी का एहसास होता है कि डिविनिटी है क्या. When the impossible becomes possible, right? So, that night I couldn't sleep. Third की रात, और मेरा initial plan ये था कि मैंने अपनी tickets 14th March की वापसी की कराई हुई थी. I think that was the weekend. So that night I just, did something crazy according to my sister and my mother, because I did not consult with anybody. और मैंने सबकी tickets वापसी की prepone करा ली, और 9th की मैंने date change करा दी. The only difference was in the initial plan, only I was scheduled to come back on the 14th. And now I just took this decision unilaterally that 9th को मम्मी, पापा, my sister, my niece, जो भी वहां गुड़गांव में था, उन सबको लेकर वापस न्यू जर्सी जाऊंगी. So 11th was महाशिवरात्रि, 11th March, और मैंने 11th को गुड़गांव में initially घर में छोटा सा सत्संग प्लान किया था कि चल छोटा, we'll all be together in गुड़गांव, तो हम सत्संग कर लेंगे. Now that I had preponed to 9th, I moved that satsang to the 7th. कि चलो छोटा सा, जितने भी handful of लोगों को बुलाना है, बुलाकर गुरुजी का एक छोटा सा सत्संग कर लेते हैं 7th का. So जब वो लोग आए, जितनी भी वो 4-5 आंटीज थी, and she's, they saw bags लगे हुए हैं, and we broke the news that I'm taking Papa back to New Jersey. There was a look of concern, a look of doubt, a look of almost a disbelief that, what is she doing? Is this girl being selfish? Because uncle को ऐसे approve करके ये कैसे लेकर जा रही है? So anyway, अब सत्संग में बैठे हुए हैं 4-5 लोग, and there's this auntie in Gurgaon. Her name is Aunty. And she's praying to Guruji that Guruji, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रही ये लड़की क्या कर रही है, और अगर ये लड़की ठीक कर रही है तो मैं आपसे कुछ नहीं मांगती हूँ, आप मुझे प्लीज कोई साइन दिखाइए कि she's doing the right thing, and that sign could be चोला मुचड़ जाए, या आपकी जुत्ती हिल जाए, या कुछ इशारा करो, मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगती. अपने मन में वो ये अरदास कर रही है. और anyway, सत्संग चलता रहा. My dad came for a few minutes in the satsang. It was a very, very emotional satsang. I think जितने भी बंदे रूम में थे गुरुजी की मर्जी से, सबकी आंखें नम थी. और सत्संग खत्म होता है, and there's another auntie sitting totally opposite from the, मतलब ये कोई possibility नहीं थी कि दोनों ने आपस में बात करी हो या कुछ. And she says, वो देखो गुरुजी का चोला हिला हुआ.
सो एक बंदे ने अपने मन में कुछ सोचा और दूसरे बंदे ने, जिसको पता भी नहीं था नीलम आंटी को कि अंजू आंटी ने अपने मन में क्या सोचा या गुरुजी के आगे क्या अरदास या क्या प्रश्न लगाया, and she answered her question that look, वो देखो गुरुजी का चोला हिला हुआ है. And that's when she said, oh my God, I think I got my answer. Now, tickets तो अब करा ली. अब बहुत सारी, sort of wrinkles को iron out करना था और time बहुत कम था. Literally 5 दिन थे मेरे पास. और 5 दिनों में संगत जी आप अंदाजा लगाइए that how do you completely uproot somebody's life for decades? किसी का बेस कंप्लीटली अप्रूव करके आप कैसे 6 या 8 बैग जितने भी बनते थे उसमें डालकर किसी की जिंदगी को आप ले आओ. बिकॉज दिस टाइम पैकिंग वाज बीइंग डन विद अ डिफरेंट माइंडसेट, with a mindset that probably he will never come back again. So I was literally removing pictures from the wall, and my dad was also asking, "Tu aise kyun kar rahi hai?" And I said, "Papa, क्योंकि हम जा रहे हैं वहां पर." And then I still remember he looked at me, he said, मैं कर पाऊंगा, मैं बहुत थक जाता हूँ. And I said, देखो पापा, ना आप करोगे ना मैं करूंगी, करेंगे गुरुजी. And I said, just stay with me, stay strong with me, because if we fight this together, we will win, Papa. These were the words I used. So, जब डॉक्टर ने वो बताया कि सांस नहीं ले पाएंगे, तो फिर मैंने कहा कि सबसे पहले तो एयरलाइन से पूछती हूँ कि ये तो नहीं कि वो अलाउ ही नहीं करेंगे फ्लाई करना. So the call was made and they confirmed that no, they do not need any medical certificate. मैंने तो हाथ जोड़ा, मैंने कहा thank you गुरुजी. First biggest roadblock was कि एयरलाइंस ने कोई अड़चन नहीं डाली. अब दूसरी बात आती है ऑक्सीजन सिलेंडर की. तो उसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह पता करने शुरू किए कि अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना है, गॉड फॉरबिड उनको ब्रीदिंग इश्यूज हो जाती हैं या कुछ भी हो जाता है, बिकॉज इट्स अ लॉन्ग फ्लाइट, तो होना चाहिए. यू ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट बट यू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. और मन में मतलब मेरे को आयोटा ऑफ डाउट नहीं था, मेरे को यकीन था कि उस ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. बट फिर भी अब क्योंकि अब ये मन में डॉक्टर ने बात डाली है, तो फिर तैयारी तो करके हम जाएंगे. यूनाइटेड की वेबसाइट पे देखा तो उन्होंने ऑक्सीजन सिलेंडर के स्पेक्स वगैरह दिए थे, बट उन्होंने एक क्लॉज डाला था that it must have a battery life of 18 hours, otherwise we will not allow. अब जी जो ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल था, जो साइज का, जो स्पेसिफिकेशन से मैच करता था, that comes with one battery which lasts for 2 hours. अब दिन बहुत कम जी, अब दूसरी बैटरी ढूंढो. दूसरी भी नहीं, अगर 18 घंटे के हिसाब से लगाओ then you need 9 batteries. तो सप्लायर ने कहा जी हम एक एडिशनल बैटरी दे सकते हैं और तो हम नहीं दे सकते. एंड एवरीथिंग adds to the weight. So, and of course it comes at additional cost. So everything was piling up. Oxygen सिलेंडर महंगा, उसके ऊपर बैटरीज एक्स्ट्रा चाहिए, वो महंगी. सो ऐसे चलो 2 मिल रही है तो 2 लेकर जाती हूँ, which gives me a battery life of 4 hours. ऐसे चलो we'll take our chances, देखी जाएगी. So sure enough, that wrinkle was ironed out, that no permission is required from the airlines, Papa can travel. Second was oxygen cylinder arrange hua jaise taise karke with 2 extra batteries, right? Third thing was, of course, this entire packing, literally karte karte hamare ji sabke kul milakar ho gaye 16 bag. Now I am literally stripping swarups from the wall, और मम्मी पापा के घर में 2 गुरुजी के लाइफ साइज स्वरूप्स, वो लाइफ साइज 100 इंच वाले स्वरूप्स लगे हुए. तो अब घर अगर खाली कर रहे हो तो ये स्वरूप्स तो आप छोड़कर जा ही नहीं सकते. लेकिन अगर लेकर जाओगे तो ये कैसे लेकर जाओगे, ये किस हैंडबैग में आएंगे, कौन सी एयरलाइन करेगी. तो फिर से जी कॉल्स वगैरह शुरू हो गई. We gave them the measurements and they said, yeah, the airline should not have a problem and you can, check that in as a separate bag. So चलो वो हुआ, फिर उस स्वरूप्स की स्पेशल पैकिंग कराई फटाफट. Now all this is a battle against time because दिन बहुत कम थे. Tuesday the 9th की फ्लाइट थी. Friday को, I don't know why Guruji put this thought in my head amongst amidst all this chaos जो non-stop चल रहा था. एक पापा की डिप होती हुई हेल्थ, ऊपर से
इतने लूज एंड्स जो टिक एंड टाई होने वाले थे, बैंक्स का, लॉकर्स का काम, यू कैन ओनली इमेजिन, राइट? आई कैन नॉट इवन लिस्ट आउट कि क्या क्या होने वाला था और वो कैसे हो रहा था, मुझे खुद भी नहीं पता, बिकॉज मेरे को तो स्टार्टिंग पॉइंट भी नहीं पता था कि स्टार्ट कहाँ से करना, खत्म कहाँ से करना और एग्जीक्यूट कैसे करना है. सो आई वांट टू बी वेरी क्लियर दैट इट वाजंट मी, it was him driving me to get those things done, and I have no doubt about that. So फ्राइडे आफ्टरनून हम बैठे थे, एंड अगेन मेरे दिमाग में पता नहीं कैसे ये ख्याल गुरुजी ने दिलवाया, that I asked all of them. I asked mom. I said, Mama, अपना, पापा का, पूजा का, टैमी मेरी niece, उसका, सबके passports मेरे को दो. I just want to check the validity of the passports and look at the visas, because the last thing you want is that you show up at the airport and nobody's traveled in the past 1 year and किसी का passport या visa या कुछ expire हो, क्योंकि हम अक्सर ऐसी चीजों का ध्यान नहीं रखते. So sure enough, everybody else's passport was valid with valid visas. When I look at my niece's passport, her passport expired a couple months ago, and because she's a minor, she needs to get her passport renewed not every 10 years but every 5 years. So she had a valid visa but an expired passport. अब फ्राइडे आफ्टरनून हो गई है, ट्यूसडे की फ्लाइट है, सरकारी दफ्तर वीकेंड्स पे काम नहीं करते, तो आपके पास बचा एक दिन मंडे का जिसमें आपको पासपोर्ट रिन्यू करवाना है, otherwise she can't go. And I will cut the long story short, another Guruji sent angel, Anil Malhotra, he came through, passport ka kaam ho gaya. And again, these are all pieces of puzzles, how Sangat came together throughout my dad's sickness, langar coming from Bada Mandir, the Sangat pouring in, the support. Otherwise, it's not easy for elderly people to be by themselves. My sister being able to travel from Maharashtra, which is like the hub of COVID, to Gurgaon to support my parents. Like, these are the little things that I cannot even, count. Agar main ye mention karna shuru karun, to I'll probably run out of breath and you guys will run out of time. Puri raat nikal jayegi. All this, pieces of jigsaw puzzle coming together and Guruji making everything instrumental. So, passport hua, Tuesday को हम लोग जब एयरपोर्ट के लिए निकले, it was literally like a convoy, because इतना सामान था, 16 बैग थे, 2 बड़े-बड़े वो स्वरूप वुडन कार्टन में पैक होकर, so एक गाड़ी सेपरेटली सामान के लिए लेनी पड़ी. So the situation was like that बड़ी कार with गुरुजी स्वरूप्स आगे, बीच में पापा की कार और उसके पीछे 2 सामान की गाड़ियां और कुछ संगत की फैमिली हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आ रही थी. सो इट जस्ट फेल्ट लाइक कि गुरुजी आगे में लीड कर रहे हैं. जब हम एयरपोर्ट पे उतरे भी तो सबसे पहले वो गुरुजी के बड़े स्वरूप अंदर गए और चेक इन हो गया सीमलेसली, लाइक एवरी बैग वाज ओवरवेट, बट किसी ने कुछ नहीं पूछा. इट्स एज इफ वो 2 स्वरूप आगे हमारा चेक इन ही करवाने आए थे. उसके बाद जी वो स्वरूप्स की स्टोरी शुरू हुई. वो स्वरूप अब एक्सरे मशीन पे फिट ना आए. So the airline said, we don't have a problem carrying the Swaroop, but if these Swaroops do not fit on the X-ray machine, we cannot take it down to the plane and hence this cannot fly with us. अब X-ray machine पे fit कराने के लिए कार्टन खोलने की कोशिश करी, but वो इतने अच्छे से पैक हुए थे कि कार्टन खुला नहीं और हम गए थे एयरपोर्ट लेट, so we were running out of time. Literally, we had 30 minutes from check-in to get to the flight. So bottom line is कि वो स्वरूप नहीं आ सके and those स्वरूप्स were sent back. So I was feeling very dejected कि स्वरूप्स क्यों नहीं आ सके. But फिर एक तरफ ये ख्याल आया कि नहीं, these स्वरूप्स had come to the airport to serve a purpose and maybe they'll come at a later date. Anyway जी, फ्लाइट में हम जाकर बैठे और I connected to the Wi-Fi on the flight and I started texting people कि ऐसे ship कराना है, but the size is very big, तो किसी भी X-ray machine पे वो fit नहीं आ रहे, तो कैसे आएंगे. And then I got in touch with Batra uncle and he said, don't worry, आपके स्वरूप यहाँ आ जाएंगे. So literally while we were still airborne, स्वरूप्स का were sorted and it just occurred to me that गुरुजी हमें एयरपोर्ट पे सी ऑफ करने आए. उसके बाद जब स्वरूप्स को वेलकम करने का टाइम आएगा टू न्यू जर्सी, वी ऑल विल वेलकम दोस स्वरूप्स.
So that happened. And the second aspect was getting through the flight. Now ये fear था that if dad needs to go to the washroom, कैसे होएगा, breathlessness की issue ना होए, clotting की issue ना होए. और throughout मतलब the flight कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा था कि बस गुरुजी का साया आसपास है. And it was seamless. हमने ऑक्सीजन सिलेंडर को हाथ नहीं लगाया. कोई ऐसी issues नहीं आई where we felt that things were unmanageable. And I still remember कि while we were airborne, there were so many people literally praying. There is sangat in New York, New Jersey, जो पूरी रात नहीं सोई, and they just kept chanting पूरा time गुरुजी का नाम कि flight की पापा की safe landing हो जाए. And when we touched down New Jersey में, literally tears rolled down. और हम बाहर निकले और गुरुजी की इतनी fragrance कि mask के through वो आ रही थी. उसके बाद getting through immigration, I remember that my mom was asked to do fingerprinting, left hand, right hand, और मैंने पापा का passport दिया as if उनको तो देखा ही नहीं उन्होंने. Literally वो like हवा की like a breeze वो बाहर निकले. कोई उनको fingerprinting, कोई retina scan नहीं, कुछ नहीं. बाहर आए, we took our luggage, we got home, and it was 10th morning that we got home. Now my dad was not in a good state, और उस दिन मुझे ऐसे लगा कि I'm going to lose him. और फिर वो मन में self doubt आया कि मैं उनको वहां से literally uproot करके ले आई हूँ, क्या मैंने ठीक किया है? अगले दिन शिवरात्रि थी. मन में ये था कि सत्संग अगर गुड़गांव में प्लान किया है तो न्यू जर्सी में भी करेंगे. और अपने फ्रेंड्स के साथ सारी कोऑर्डिनेशन कर ली. गुरुजी के लिए बेर आ रहे हैं, सब कुछ, एवरीथिंग वाज डन. बट मन में ये धुक के क्या पापा दरबार में आ भी सकेंगे? क्या होएगा? विल ही मेक इट? विल ही नॉट मेक इट? और विद ऑल दीज क्वेश्चंस मैं गुरुजी के आगे फिर एक अरदास करके सो गई उस रात. कैसे गुरुजी आपने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया. मैंने छोटी सी आपके आगे अरदास रखी. एंड आई डोंट वांट टू बी योर ग्रीडी डॉटर, एंड आई डोंट वांट टू बी प्रिस्क्रिप्टिव, एंड वी ऑलवेज से मंगो नहीं मनो. तो मैं मांगूंगी नहीं, बिकॉज यू नो बेटर देन आई. You know where his soul is required, and I don't want to stop that. Kya pata, Guruji is taking him towards a path of salvation. Maybe he's required in Shivlok. I don't know. But I said, Guruji, as a daughter, agar itni dur se you made it possible, to please ek bari aur, I want to see him mobile, and I want him to do your gungan. Jana sabne hai. लेकिन आपका गुणगान करते हुए जाएं, चलते फिरते हुए जाएं, बस ये ही अरदास है. I'm never going to tell you उनकी 5 साल लाइफ और बढ़ाओ या 5 महीने बढ़ाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी. बट कल घर में शिवरात्रि का सत्संग है और मेरे बहुत डिजायर है कि वो दरबार में नीचे आए. Sure enough, 11th, he was much more coherent than he was on the 10th, because 10th को तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वो है कहाँ पर. And we were all very concerned about his condition. Magically overnight, the day of Shivratri, he was more coherent. Satsang hua, puri vidhi purvak hua. In fact, Sachkhand ka prasad came for him from New York, क्योंकि वो प्रसाद exactly 1 साल पहले नीता आंटी के घर में वो शिवजी की मूर्ति से manifest हुआ था. And I will share the video with some of you. It is so clear. Literally 1 year ago, वो बाहर निकला और उसके literally कुछ drops बचे थे. And how a year later it made its way to my house on the day of Mahashivratri कि वो पापा के मुंह को लग सके. And that happened. Or that day was full of blessings in ways more than one, because उसी दिन गुरुजी की, I still remember, multilingual biography का launch हुआ. और शिव पुराण में किसी और की टर्न थी, वो मुझे पढ़ने को मिल गई. फिर घर में सत्संग हुआ. और because संगत पे quite a few people showed up, so हम पापा को literally दरबार में उठाकर भी ला सके. So every little thing that I had desired and which I thought was not possible happened. So that happened, and then a week later
his condition dipped again, because every day it's full of surprises. And like I said, it's an insurmountable sort of uphill battle. And every day some challenge or the other manifests itself. So unki halat kharab ho gayi. His BP dropped to 50. He was dehydrated. I called the paramedics. और मैं ये short में सुना रही हूँ because there's so much detail, because रोज कुछ होता है, and how Guruji gets us out of that situation. So when the paramedics came, they said, which hospital do you want to take him to? और हमने जब बोला, Robert Wood Johnson, और फिर डॉक्टर की कुछ बात चली, पता चला, and I knew it because ये भी गुरुजी का डिजाइन है, that I moved into a new community last summer, और walk करते करते, because that doctor is also Guruji's Sangat. Her name is Kusum. She saw the car outside my car with Guruji sticker. So she said, ye Guruji wale Sangat kaun si yahan par ho hui hai? And she knew of me, but we didn't really know each other. So wo bhi Guruji ne kaise connect kiya, because Guruji knew that couple months later dad is going to be here and be under her treatment. So jab emergency room ki baat hui, that Sangat, who is my neighbor, was running the emergency room at Robert Wood Johnson. और आप imagine करो, जब paramedics ने बोला, oh, Dr. Punjabi, she's your neighbor, and if she's going to come home, then don't even bring him to the hospital. Sure enough, she came home that night, and she said, next morning, bring uncle, and we will just hydrate him, and we'll do some vitals, etc. on him, and we'll take it from there. And so imagine karo Sangat ji, that the doctor is waiting outside the hospital to take care of dad with an attendant and everything. Otherwise, यहाँ पर COVID की इतनी महामारी फैली हुई है that in emergency rooms में आप जाके देखो बुरा हाल है. People are literally, sleeping on hallways, and by Guruji's grace, she had a private room ready for dad, did all the vitals. She was surprised to see. She was like, I was expecting, jab bahar triage nurse ne BP liya, BP was low. By the time he got the bed, by the time he got to the room, his BP became normal. She was surprised to see the numbers. Then she did some fluid testing, and again, she was expecting sodium to be low, and she was surprised. And her words were, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ये सब हो कैसे रहा है. And then she corrected herself. She said, actually, मुझे पता है ये कैसे हो रहा है. And through that visit, so many other doors opened, because I was worried about the financial aspect. कि यहाँ पर पापा के पास insurance नहीं है. I cannot cover him under my insurance. तो कैसे ये bills का होगा? वो भी गुरुजी ने, कैसे रास्ता निकाल दिया, and he was eligible for a lot of benefits because he doesn't have an income, जो मेरे को पता ही नहीं था. So in short, मैं आपको बता रही हूँ कैसे doors खुलते गए. Then again, a week later, he ended up in the hospital, and my friend, my neighbor, Dr. Punjabi, wasn't even there. और जब ambulance में वो पापा को लेकर जा रहे थे, तो मैंने यही बोला. I said, Guruji, I know Dr. Punjabi is not there, but I want कि आप रोम में पापा के अंग संग रहना. And again, no coincidences. The attending nurse that day, Papa ki was a transgender nurse, और उस nurse का नाम था Hope. And can you imagine a Jewish nurse, transgender nurse by the name of Hope? And when my dad sort of regained a little bit of consciousness and became more coherent, the conversation they were having was about Shiv Puran and Bhagavad Gita. So मैं यही देखकर हैरान थी कि जब पापा की आवाज थोड़ी सी वापस आई, तो उनका फोकस कहाँ था? उनका फोकस महाशिव में था. And they were having, conversations about Shiv Puran, and my dad was like, इसको Shiv Puran हमने देनी है. I was just very happy to see that. And I'm not saying he's out of the woods, but when the doctors here also said, oh, hospice, because we cannot treat him, it's stage 4. फिर से, वो अपने दिल में वो fight बाकी रहनी कि नहीं, hospice नहीं, I'm going to try at Cancer Institute of New Jersey. उन्होंने blood work के लिए technician को घर पे भेजा. Another satsang, another quick satsang in this. My dad's nerves are so thin now that they collapse. कोई needle insert होती है तो वो collapse कर जाती है, तो blood draw करना बहुत मुश्किल हो जाता है. So when that nurse came,
और पापा के कमरे में मंत्र जाप चल रहा था. So she was a non-Indian. She said, what is this chanting that you guys are playing? It feels very, very soothing. It feels very peaceful. So हमने बताया ऐसे से गुरुजी का. So she said, okay, I'm going to stick him and try to get 2 tubes out. But I am legally only allowed to stick him once. And in any circumstances, not more than twice. एक बार उसने needle stick की, नहीं निकला. दूसरी बार की, she said, this is the last time I'm doing it, nahi nikla. And we were like, please, 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 it is very important कि ये उनका blood draw हो, so that if there is any hope of getting a gene marker and starting, treatment, a targeted treatment towards cancer, वो हो जाए. I don't know Guruji की क्या कृपा थी. She tried the 3rd time, and then finally when she tried the 4th time, she got 1 test tube of blood. She's like, look, this is the maximum I can get from him. Normally, they need just 1 test tube full of blood. They tell us 2 test tubes just in case something happens. But I'll have to write to them that I could not get the 2nd tube. This is all I have. So she drew the blood. 1 tube उसने निकाला, लेकर चले गई. And, I am just so hopeful that 10 दिन लगते हैं रिजल्ट्स आने में कि मेरे को लगता है कि पापा का जीन मार्कर का मैच मिल जाएगा. बिकॉज जब उनकी डॉक्टर के साथ फर्स्ट मीटिंग थी, वो डॉक्टर तो ब्लड वर्क भी ऑर्डर करने के लिए शी वाज रिलक्टेंट. शी इज लाइक, लुक, ऑल दीस टेस्ट्स हैव ऑलरेडी बीन डन एक्सटेंसिवली इन इंडिया, व्हाई डू यू वांट अ सब्जेक्ट? एंड इट्स लाइक दैट वॉइस टेलिंग, टॉकिंग इन योर माइंड एंड यू पुशिंग द डॉक्टर, नो, आई वांट टू टेक दिस चांस, please order this blood work, we will take our chances and we will fight till the last breath. And all this, all these little things that are happening and unfolding and manifesting, I think it's all for a bigger plan, a bigger purpose, because I do believe that this will go on to become the biggest satsang, because I only know what I see on a daily basis and I see his condition fluctuating. But I also have hope that at the end of the tunnel, Guruji has a plan. Otherwise, ये होता ही नहीं. और ये बैटल मैं सिर्फ विश्वास के दम पर फाइट कर रही हूँ. I have nothing else but faith and unflinching faith in my Guru. So, the satsang is still, it's still just together to continue. We don't know what's going to happen, but मेरा मन कहता है that one more time, पापा अपने आप आकर गुरुजी का अपने मुंह से शुक्राना करेंगे. And regardless of whatever the outcome is, जो भी हो, Guruji knows. All we know is that whatever is happening as per his will. And it is the best that is, that he is doing for us. Because anything that we get is definitely way more than we can imagine and way more than we deserve. And I always say, his will, his way, his timing, but our faith. So, abhi aaj ke liye itna hi. All I will say is ke, collectively hum ardas karte hain and let us set this desire into universe to manifest that, पापा को सेहत बख्शें और वो अपने मुंह से, अपनी जुबान से, अपने अल्फाजों में एक बार फिर गुरु साहिब का दिल खोलकर शुक्राना और गुणगान कर सके. So thank you, Guruji, for all your blessings, known and unknown and seen and unseen. Eternally grateful to you. Please अपने चरणों से दूर मत करना. सरबत का भला, सदा शुक्राना महाराज. Om Namah Shivaya. Jai Guruji. Jai Guruji. Jai Guruji. Back to you, Aunty. Beyan Shukrana Guruji Maharaj ka. And there are no coincidences in his darbar, we all know. And according to US time, today it is April ki Masik Shivratri. And you know how Guruji picked you for today's Sangat, and we know how you were picked up by Guruji. You were mentioning 11th March Shivratri and I was smiling, or I had no clue, because the team that we have made recently, as you are aware of, I'm not naming names, so we celebrated it last night, and aaj ke hisab se US mein Masik Shivratri and you're sharing.
So it is his Jai plan, Guruji. right? And I Jai was waiting Guruji. for you to Absolutely. finish, and I was all ear to ear smile ki Guruji kya karte ho, you know? Yes, yes, And yes. जो करते हैं वही करते हैं. It is beyond our comprehension and beyond our planning and design capabilities. as you say, he's given me those words. It is his show. He's the boss. So the boss orchestrated this. The biggest message that you've given to all of us is acceptance. The takeaway for me is acceptance. And COVID time पे acceptance से बड़ा message Guruji दे ही नहीं सकते. We are all daughters attending Yes. here, and we are all connected to our fathers. And the rock solid inspiration that you're giving to Sangat is beyond words. I can connect with you the needles part because I've lost my mom. My mom is with Guruji. But Jai the Guruji. pain and the battle that you are on a daily basis fighting is not easy, and only he does it. And Yes. beyond words, we are thankful to Guruji and you for sharing this big message that accept karo. Once you accept, and then his, as you say, his will, his way, everything. Yes. And the next message is balance and enjoy. Gurmat, Gurmukh is basic message that we are going to be following him. And as you rightly said, na, when you were talking about Dr. Ki, he knows everything, they know everything. But I was listening to a Vyakhya where they said ki pata hai that food makes blood, but science has not been able to find out how, with all that knowledge, they can use that food to make blood. It's still in his hands. Right, So, right, right. so when you Absolutely. said that, I was immediately, it is his blessing only. That immediately that thought flashed in my head, and I was like, what a big message for all of us. कि तो गुरु जी का सेंटेंस ना दिमाग नहीं लगाओ जूतियों के साथ छोड़ के आओ. This was the living satsang, which is going to give us inspiration. And uncle is in our prayers all the time. We all mostly are praying about him in hearts of ours because like your little one has been your shadow. We see him just behind Guruji in most of the videos. So each Mhm. time we see Guruji's videos and see uncle, immediately dil mein hota hai ki Guruji, you know what's the best and do the best. Right, So right, thank right. you so Absolutely. much for these profound messages on Masik Shivratri, which Guruji sent you on. And as a ritual that we follow here on this virtual satsang. I don't like the word platform somehow. So Varun Seema auntie's son's birthday is there. Sangat ji, किसी का भी birthday आज है, आपकी family में किसी का birthday है, हम सारी संगत परिवार की तरफ से आपको गुरुजी की blessings मिले. Many happy returns of the day to all in the family or who's attending. May Guruji keep you in his charan sharan and give you naam. And thank you so much, Anji, for being there and being the inspiration for many. With these words, I request Subodhji to take over and play the Agya Shabad. And Happy birthday. getting a compliment from you second time has made my day and life. Shukrana, Guruji. It was heartfelt. Jai Guruji. Yes, Shekari. गुर जैसा नाही गुरुदेव जिस मस्तक पार सुलारा से जिस मस्तक